Hi everyone. Today we are starting with the last topic of this chapter, that is applications of derivatives in economics. Now this is a very big topic, okay? तो हम लोग एक्चुअली डेरिवेटिव्स को कैसे इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं इसके बारे में बताया हुआ है. अब इसमें से कुछ चीजें यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड. We will look at all of that again so that in case you have forgotten, so this will be like a good revision for you. And then we will look at some new concepts, okay? We have 3 major new concepts this year. Fine. So let us start with the first thing that we have already studied in 11th standard. The first one is the demand function. Okay. So demand is a function of price. We know कि जैसे price change होता है वैसे demand change होता है. And exactly कैसे होता है वो एक function के through बताया जाता है. And hence we write that D is equal to some function f of P. Okay, it could be something like minus p square, it could be minus p plus 5, it could be anything of that sort. Okay, so when we express demand as a function of p, we can also find out marginal demand, which is the change in demand with respect to the change in price. So when price changes, तो demand किस तरीके से change होता है वो देता है marginal demand. Okay. Now next, the second function that we studied was the supply function. Now supply function is going to be again a function of the price. Price जो रहेगा उसके ऊपर it will depend कि supply कितना रहेगा market में. Okay. And hence we can also find marginal supply and that is obtained by differentiating S with respect to P. Okay. So these are the two functions that are dependent on price. And when we say marginal anything, no, we want to take the derivative. We want to see the change. Okay. Now going on to the next topic, that is total cost function. Now what does our cost depend on? The cost depends on the number of items that are being produced. जितने items बनाएंगे उसके हिसाब से cost depend करेगा. Therefore cost C is equal to the function of X and X is basically the number of items produced. Okay. Marginal cost is going to be the derivative of C with respect to X. Okay, marginal again is going to be the derivative. And average cost क्या होता है कि हमेशा ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक आइटम बनाने को 50 रुपया लगता है तो टोटल कॉस्ट फंक्शन विल बी 50x. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, वो 50x हो सकता है. प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल तो फिर हम सबके लिए ही भरते हैं तो वो 100 रुपीज सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल है प्लस कुछ और है. तो ऐसे सब कुछ मिला के जब हम निकालते तब हमें कॉस्ट फंक्शन मिलता है. ठीक है. एंड फिर एवरेज कॉस्ट क्या होगा? इफ आई डिवाइड जो भी टोटल पैसे खर्च हो रहे हैं बाय द नंबर ऑफ आइटम्स तो मुझे मिलेगा कि एक आइटम का कितना कॉस्ट है ऑन एन एवरेज. ओके, सो दैट इज विद द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एंड द एवरेज कॉस्ट. ओके. Now next concept is of total revenue. Revenue मतलब जो पैसा आता है अपने पास. ठीक है. Whatever you get on selling is called as revenue, not profit. Okay. जितने पैसे आ जाते हैं उतना ही. ठीक है. तो total revenue is equal to the price into the demand. जितनी demand है plus into उसकी price करेंगे तो हमें revenue मिल जाएगा. And the average revenue is given as revenue divided by demand. जितने products बिके. Right. And that actually just gives us the price of that object. Okay, so the average revenue is nothing but the price. And the last one is total profit, which is nothing but the revenue minus cost. Okay, so जितना मिलता है उसमें से अगर हम cost निकाल देते हैं तो we get our profit. So these are the 5 concepts that you have studied in 11th standard. Demand function, supply function, both of them a function of price. Cost function, this is a function of the number of items produced. Then we have revenue, which is P into D, and average revenue is P. We can also find marginal revenue, by the way. So what we can do is just differentiate revenue with respect to D. तो फिर marginal revenue मिलेगा. And then we have total profit. Okay. Now this is for recap. Now let us study the concepts that we are going to study for 12th standard. So the first concept for 12th standard is elasticity of demand. Now this is something I'm sure you must have studied in economics. So I'm just directly giving you the formula here that elasticity of demand is denoted by this Greek alphabet eta, which is equal to minus P by D into derivative of D with respect to P.
where P is the price and D is the demand. So what is elasticity of demand? I won't give you a very detailed explanation for this. I'm sure you must have done it in economics. But basically what it shows, this measure, it shows how elastic is D with respect to price. As in, how much does the demand change when price is changed. Okay. So for some things, if the price of that object is changed, even to a very great extent, the demand doesn't really change. Okay. And for certain things, even if the price is not changed, the demand changes. Okay. So we want to understand how much does the demand change with respect to price, and that is given by this eta. So first thing that we have to realize here is that we know that demand and price are inversely proportional. जब हम inversely proportional बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे डिमांड कम होता है. करेक्ट, बहुत लॉजिकल है. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे ही बारिश होती है और कांदे का भाव बढ़ता है तो हम लोग सबके घर पे कांदा खाना थोड़ा कम कर देते हैं या सोच सोच के खाते हैं. तो पहले जब हम 2-3 किलो खरीदते थे, अभी हम 1 किलो में ही काम चला लेंगे. ठीक है, ज्यादा अननेसेसरीली नहीं कट करेंगे. तो जैसे प्राइस बढ़ा वैसे डिमांड फॉर कांदा ड्रॉप्ड. ओके, सो दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल एंड देयरफॉर वी कैन ऑलवेज से दैट डिमांड इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस. प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड कम हो रहा है. राइट, सो इजंट दिस द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शंस लाइक वी हैव सीन बिफोर? एंड हेंस जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए. ओके, अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, एंड आई नो दैट प्राइस एंड डिमांड ऑलवेज हैव टू बी समथिंग पॉजिटिव, राइट? सो ये नेगेटिव साइन इनटू इसका नेगेटिव साइन एंड हेंस वी विल गेट ये जो ईटा है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा. ओके, सो देयरफॉर एज डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इज लेसर देन जीरो, price is always greater than zero, demand is always greater than zero. Hence, we get that eta is always greater than zero. Okay, actually, it could be equal to zero also in the case where this is zero. We'll just look at that now. So, if eta is zero, what does that mean? That the demand is not changing at all with respect to price. मतलब dd upon dp is equal to zero. इसका डेरिवेटिव है जीरो. किसी भी चीज का डेरिवेटिव कब जीरो होता है? जब वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है. राइट, सो हियर एक्चुअली डिमांड इज अ कांस्टेंट फंक्शन ऑफ प्राइस. मतलब कि चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो जाए, डिमांड उतना ही रहता है. ओके, इट इज अ कांस्टेंट एंड हेंस जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तब जीरो मिलता है. दिस इज व्हेन वी से दैट द डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. ठीक है, डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है. इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक इज समथिंग, अगर एक रबर बैंड होता है, हम उसको खींचते हैं तो वो एकदम बड़ा हो जाता है. राइट, तो वो चेंज होता है जब हम कुछ चेंज कर रहे हैं तब. राइट, तो यहाँ पे हम प्राइस चेंज करें पर फिर भी डिमांड चेंज नहीं हो रहा है. सो देयरफॉर एज डिमांड डज नॉट चेंज एट ऑल व्हेन प्राइस चेंजेस, हेंस वी से दैट द डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. कोई भी इनइलास्टिक चीज कभी भी स्ट्रेच नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती. Okay, hence this name is given over here. Okay, now let us look at the next remark over here. So suppose eta is between 0 and 1. मतलब 0 तो नहीं है लेकिन 1 से कम ही है, अभी भी मतलब छोटा ही है. तभी भी say that the demand is relatively inelastic. ठीक है, inelastic ही है पर completely perfectly inelastic तो नहीं, थोड़ा बहुत ही inelastic है. Okay, then when eta is equal to 1, that is when actually the demand is exactly proportional to the price. When I actually am taking that P और D सेम ही है, राइट, और ये डिक्रीजिंग होता है तो इसलिए ये नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे -1 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड हेंस वी विल जस्ट गेट 1. ओके, सो देयरफॉर वी गेट दैट इन दिस केस इट इज यूनिटरी इलास्टिक. नाउ नेक्स्ट, whenever eta is greater than 1, then we say that the demand is relatively elastic. ठीक है, so in these cases it will be relatively elastic. Now questions कैसे आएंगे? तो they will give you the demand function and they will ask you to find out the value for eta. Okay, and then they will say you remark on this कि ये कैसा टाइप का डिमांड फंक्शन है. इज इट इलास्टिक, इज इट परफेक्टली इनइलास्टिक? सो यू हैव टू रिमेंबर दीज कंडीशंस कि ईटा अगर 0 है देन इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, 0 और 1 के बीच में है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, अगर वो यूनिटरी इलास्टिक है देन इट इज 1, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज
relatively elastic. Okay, so this was the first concept. Now let us look at the second concept. The second concept is the relation between marginal revenue, the average revenue and the elasticity of demand. Okay, so इन तीनों के बीच में एक relation निकालना है. Now we know that marginal revenue is revenue का derivative with respect to demand T. Then the average revenue is equal to P into D divided by D. तो D और D cut हो जाएगा and we get P. Then eta is equal to minus P by D, dd by dP. Okay. So these three का मैंने definition लिख दिया है. Now what I do is यहाँ पे ना I know that revenue जो होता है वो P into D होता है. तो मैं यहाँ पे UV रूल से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करती हूँ. तो क्या करेंगे, पहले P को ऐसे ही रखेंगे, फिर D का डेरिवेटिव D से लेंगे तो वो तो 1 आएगा. फिर D को ऐसे ही रखेंगे और फिर P का डेरिवेटिव लेंगे D के साथ. ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया ना, यहाँ पे इन दिस प्लेस मैंने P और P ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे और फिर मैंने P कॉमन निकाल लिया. ठीक है. तो यहाँ पे 1 रहता है और यहाँ पे रह जाता है D by P dP by dd. ओके, कैन यू सी दैट ये जो है ये इसका रेसिप्रोकल है. इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगी तो ये आएगा. तो एक्चुअली ये 1 by eta है लेकिन माइनस के साथ. ठीक है. And hence I have written that this is 1 minus 1 by eta. Fine. Now I know that P is equal to RA and hence we get this important relation that RM is equal to RA 1 minus 1 by eta. RA is the price also. It's the same thing. Okay. So बहुत बार इसके बारे में questions पूछते हैं. They will give you 2 of these and 1 will be missing and you're supposed to find out the third. Okay. So this is the second concept. Now let's move on to the next one. So now the next concept is about expenditure and saving. Okay. So here we have to realize that the expenditure and the saving of a person depend on his income. जितना इंसान कमाता है उसी के हिसाब वो खर्च करता है और उसी के हिसाब से वो बचाता है. ठीक है. So if there is a person with income X and his consumption expenditure, मतलब जितना वो खर्च करता है, ठीक है, that is written as EC depends on X. उसके इनकम पे डिपेंड करेगा वो कितना एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कर रहा है. So therefore we can say that EC is a function of X. Marginal propensity to consume. Propensity का मतलब टेंडेंसी होता है, मतलब वो कितना खर्च करेगा, वो कैसे होगा. तो that is actually given as MPC, marginal propensity to consume, and is actually the derivative of the expenditure with respect to his income X. Okay. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एवरेज पे कितना खर्च करेगा ये इंसान. ठीक है. जब ऐसी सैलरी होगी दैट इज इक्वल टू EC बाय X. फाइन. सो दैट इज APC. नाउ नेक्स्ट, इवन सेविंग डिपेंड्स ऑन हिज इनकम. सो हियर वी राइट दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कितनी उसकी इच्छा होगी सेव करने की, क्या टेंडेंसी होगी उसकी सेव करने की, is ds by dx, where s is the saving and x is his income, and average propensity to save is APS, which is s divided by x. ठीक है. एवरेज करना है तो डिवाइड करना है x से, अगर मार्जिनल करना है तो डिफरेंशिएट करना है x से. ठीक है. Now we have some important observations. So I know that income is equal to expenditure plus saving. मैं जितना कमाती हूँ उसमें से मैं खर्च करूंगी और बाकी सब कुछ मैं सेव करूंगी. बराबर. तो यही दो हमारे मोस्टली होते हैं. राइट. सो वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. एंड नाउ इफ आई डिफरेंशिएट थ्रू आउट बाई x, देन व्हाट डू आई गेट. इधर 1 आएगा. दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC, and this is marginal propensity to save, that is MPS. And hence we get that MPC plus MPS is equal to 1. Again, if I start with this line only and this time I divide by x, तो इधर मुझे 1 आएगा and this is basically my average propensity to consume APC and this is my average propensity to save, that is APS. And hence we get that APC plus APS is equal to 1. So these are the concepts that we need to know to solve the questions in this part. So I hope you have understood these concepts. Now let us look at a few questions.
So the first solved example is that the revenue function is given by R is equal to D square minus 40D, where D is the demand of a commodity. For what values of D the revenue is increasing. तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू फंक्शन दिया है एंड वी हैव टू फाइंड कि कौन से वैल्यूज ऑफ डी के लिए ये रेवेन्यू फंक्शन इंक्रीजिंग है. सो इंक्रीजिंग मतलब क्या, वी हैव टू फाइंड आउट कि वेयर इज the derivative of r with respect to d greater than 0, right? So we know here that r is equal to d square minus 40d, and now when I differentiate with respect to d, we get that this is 2d minus 40. Okay, so now we have to find कि when is revenue increasing. मतलब the revenue is increasing when derivative is greater than 0. Which implies that 2d minus 40 is greater than 0. That is when 2d is greater than 40 and when d is greater than 20. Okay. So we can say finally that the revenue is increasing when d is greater than 20, and that is our answer. Okay. Now let us look at the next question. The cost C of producing X articles is given as C is equal to x cube minus 16x square plus 47x. For what values of X the average cost is decreasing. Okay. So यहाँ पे ये cost function का value दिया हुआ है ऐसे, एंड वी हैव टू फाइंड कि कब एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 इज गोइंग टू बी टू फाइंड व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट. ओके, सो इफ कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 47x, देन एवरेज कॉस्ट इज डिफाइंड एज c बाय x. तो हम लोग हर जगह पे x से डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट दैट दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 47. हर जगह से एक एक x कट कर दिया मैंने. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड वेयर एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. मतलब कहाँ पे एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये कब लेसर देन 0 होगा, वो होगा जहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. सो दिस आई कैन ऑल्सो कॉल एज CA. ओके, and now you differentiate CA with respect to x. ठीक है, this function with respect to x, so then we get that this is equal to 2x minus 16. Okay, now average cost is decreasing when this is lesser than 0. Okay, so dCA by dx is lesser than 0. That is when 2x minus 16 is lesser than 0. मतलब 2x is lesser than 16. That is x is lesser than 8. That is when the average cost is decreasing. So you can write a statement in the end कि average cost is decreasing when x is lesser than 8. In a factory for production of Q articles, standing charges are 500 rupees. Labor charges are 700 and the processing charges are 50Q. ठीक है, तो हम लोग को अगर Q नंबर ऑफ आइटम्स बनाना है तो ये स्टैंडिंग चार्जेस है, ये लेबर चार्जेस है और ये प्रोसेसिंग चार्जेस है. ठीक है, उसके अलावा दिया हुआ है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस. ठीक है, एक आर्टिकल का प्राइस ये है. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ Q इज द प्रॉफिट इंक्रीजिंग. प्रॉफिट ढूंढने के लिए first thing we have to do is we have to find the revenue and we have to find the cost. Okay, so first step will be to find the cost. So total cost is equal to, it is going to be equal to standing charges plus it is going to be equal to labor charges plus it will be processing charges, which is equal to 500 plus 700 plus 50Q. Okay, which is equal to 1200 plus 50Q. Okay,
This is the total cost. Now next we want to find the revenue of an article. So revenue is equal to price into the demand. In this case, the number of articles is the demand. Okay. So therefore, it is going to be P into Q. P is given as 1700 minus 3Q into Q. That is the value for the demand. Okay. So for what values is the profit increasing? So we still have to find the profit. Now profit is equal to the revenue minus the total cost, which is equal to 1700 Q minus 3Q square minus this cost, which is 1200 minus 50Q. Okay, we can simplify this. So we get that this is minus 3Q square. On subtracting, we get plus 1650Q minus 1200. Okay. So profit is increasing, मतलब हम लोग को अभी डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड फिर जहां पे ग्रेटर देन 0 है वो देखना होगा. सो लेट दिस बी P फॉर प्रॉफिट, बट बिकॉज P ऑल्सो स्टैंड्स फॉर प्राइस, इसलिए हम लोग यूजुअली प्रॉफिट को P नहीं लिखते, हम इसको पाई लिखते हैं. ठीक है, जिस क्योंकि P इज ऑलरेडी यूज्ड. सो वी हैव टू डू D pi by DQ. So we get minus 6Q and here we get plus 1650. Okay, and now we have to see where it is increasing. So profit is increasing when this derivative is greater than 0. That is when minus 6Q plus 1650 is greater than 0. That is when minus 6Q is greater than minus 1650 and then we divide by minus Q, तब क्या हो जाएगा कि ये साइन रिवर्स हो जाएगा. So we will get that Q is lesser than 1650 divided by 6 and this is equal to, पहले तो 2 जा तो 4 रह जाएगा, 45 के लिए we will have 7 तो 3 रह जाएगा and that will be 5 जा. So when Q is lesser than 275, that is when the profit is increasing. Let us do the fourth question now. The demand function X for a certain commodity is given as the demand X is equal to 200 minus 4P, where P is the unit price. Okay, तो एक article का price is P. Find elasticity of demand as a function of P. Okay, so we have to find eta and वो P के terms में होना चाहिए. ठीक है, so first let us do the first part and फिर हम बाकी दो parts पढ़ते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, वी आर आस्क्ड टू फाइंड ईटा एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर ईटा इज इक्वल टू माइनस पी बाय डी 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 बाय डी पी. ओके, नाउ यहाँ पे d इज एक्चुअली x, सो हियर इट इज जस्ट गोइंग टू बी माइनस p बाय x dx by dp. Okay, so first step is let us find the value for dx by dp. Fine. So dx by dp is going to be equal to, because x is equal to 200 minus 4p, so it will just be minus 4. Okay, क्योंकि 200 का डेरिवेटिव तो 0 होगा ना, तो सिर्फ माइनस 4 रहेगा. p का डेरिवेटिव इज 1. अभी इसको इधर पुट करेंगे और x के बदले ये लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन, तो ये जो पूरा आएगा वो p के फॉर्म में आएगा ना, और वही पूछा है इधर. ठीक है, सो देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू minus p divided by we have 200 minus 4p into minus 4. Okay, so this is equal to 4p divided by 200 minus 4p. Okay, now let us do the second one. Elasticity of demand when p is equal to 10 and also when p is equal to 30. और फिर हमें दोनों टाइम पे अपने आंसर्स को इंटरप्रेट करना है, तो इसमें ही हमें सब्सटीट्यूट करना होगा दैट p is equal to 10 and p is equal to 30. सो सेकेंड वाले में when p is equal to 10, eta is equal to
40 divided by 200 minus 40, which is equal to 40 divided by 160. Okay, on cancelling we get 1 by 4. Now 1 by 4 is between 0 and 1, right? So therefore, here the demand is relatively inelastic. Now when P is equal to 30, what happens? Okay, so when P is equal to 30, then eta is equal to 4 into 30, which is 120, divided by 200 minus 120, which is equal to 120 divided by 80. And this is equal to, on dividing by 4, we will get that this is equal to 3 by 2, which is 1.5, which is greater than 1. So your demand is relatively elastic. Okay, now the third part. In the third part, we are asked that the price P for which elasticity of demand is equal to 1. So we have to find where eta is equal to 1. What will be the value for P in that case? So we have the value for eta, and let me put eta is equal to 1 over here, and then I will find the value for P. So therefore, when eta is equal to 1, then that is 1 is equal to 4P divided by 200 minus 4P. इसको ऊपर लेके जाते हैं, and then we get that 200 minus 4P is equal to 4P. Therefore, 200 is equal to 8P. And therefore, on dividing by 8, I get, on cancelling, we will just get 25, right? So therefore, P is equal to 25, तब होता है eta का value 1, okay? So this was the fourth question. Now let us look at the fifth question. If the average revenue RA is 50, मतलब RA का value is given over here as 50, the elasticity of demand eta is 5, eta is equal to 5, then find the marginal revenue. So we have to find RM. Now we know that the formula for RM is equal to RA 1 minus 1 by eta. Okay, so here we have everything on the right hand side. So this is equal to 50, 1 minus 1 by 5, which is equal to 4 by 5, and then therefore we get that this is 50 into 4 by 5. On cancelling we get 40. So the marginal revenue is equal to 40. Okay, and that is our answer. Let's do the next one. The consumption expenditure EC of a person with income X is given as EC is equal to 0.0006 x square plus 0.003 x. तो ये उसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, x उसका इनकम है, ठीक है. Find the average propensity to consume, marginal propensity to consume when his income is 200. Also find his marginal propensity to save. Okay. So first of all, we can very easily find out the average and the marginal value, right? We just have to divide by x to find average, and we have to differentiate with respect to x to find the marginal propensity. Okay. So let me write down the value for EC. EC is equal to 0.0006 x square plus 0.003 x. Okay. And to find average propensity to consume, what I have to do is I have to do EC divided by x, which is equal to 0.0006 x square plus 0.003 x divided by x, which is equal to 0.0006 x plus 0.003. Fine. This is the average propensity to consume. Now they have asked to find this when income is 200, मतलब x का value is 200. So APC when x is equal to 200 is equal to 0.0006 into 200 plus 0.003, which is equal to,
So this will be पहले ये zeros हट जाएंगे, तो we will have 0.06 into 2, मतलब it will be 0.12 plus 0.003, मतलब 0.123. This is the average propensity to consume when x is equal to 200. अभी marginal propensity to consume ढूंढते हैं. So marginal propensity to consume is equal to DEC by DX. Okay, we have to differentiate. मतलब क्या रहेगा? It will be 0.0006 into 2x plus 0.003. Okay, and now we have to find this when x is equal to 200. So MPC when x is equal to 200 is equal to, it will be 0.0006 into 2 into 200 plus 0.003. So this is equal to 0.06 हो जाएगा, ये 2 zeros हटने के बाद, into 4, तो it will be 0.24. ठीक है, plus 0.003 which is equal to 0.243. Fine. So we found this part. Okay. Now also find his marginal propensity to save. So we know formula है एक, that marginal propensity to consume plus marginal propensity to save is equal to 1. Okay. So therefore इसका value हमें मिला है ना. So what we will do is we will write MPS is equal to 1 minus MPC, and MPC का value is 0.243. तो इसको 1 बनाने के लिए what will I have to do? पहले 7 आएगा, तो फिर इधर हमें 9 बनाना होगा, तो 5, फिर this will also be 9 बनाना है, तो 7, तो it will be 0.757. Okay, that will be the marginal propensity to save. Okay, so with that we are done with the solved examples. Now in the next video we will discuss the exercise 4.4.